Good morning, students. This is Diwakar Rana, and today I am going to start some new chapters. That is the chemical reaction and equations. So, first of all, we will know about the what is chemical reactions. The reaction in which the new substance is formed with new property is known as the chemical reactions. Let me say about the with the help of examples. Uh, the very first example, suppose that magnesium is when magnesium is react with oxygen, it will form the magnesium oxide. Then this is the magnesium metal, and when metal is react with oxygen, it is formed the magnesium oxide. This is the basic in nature. We can say that the magnesium oxide is different from magnesium and oxygen, because we know that magnesium oxide is in the solid state and it is in the gaseous state, and it is from the magnesium oxide which is in the solid state. So we can say that the any new substance formed with new property is known as the chemical reactions. So next topic is the chemical equation. Chemical equation is the symbolic representation of the chemical reaction is known as the chemical equation. In another way we can say that किसी भी reactions को अगर हम लोग symbolically उसको represent करते हैं, then it is called the chemical equation. So let us know about with the help of examples. So magnesium and oxygen, it will give the magnesium oxides. So in the chemical equations there are two sides. This is the left hand side and this is the right hand side. The compounds and the substance which participate in the reactions, it is known as the reactants. And it is represented is the in the left hand side, and the newly substance formed during the reactions is known as the product, and it is represented as the right hand side. And the reactants and the products are separated by the help of arrow. This indicate the completion of reaction. It means magnesium and oxygen react with each other and form a new substance, that is the magnesium oxide as a product. Now move to the next slide. This is the chemical equations. This is magnesium and oxygen react when reacts, it will give the magnesium oxide as a product. Next topic is the balance equation. Next topic is the balance equation. Then हम लोग जानेंगे कि हमारा balance equation होता क्या है. The any equations which have the equal number of the atoms of each elements in the left hand side as well as right hand side is known as the balanced chemical reactions. So इसमें balanced chemical equation उसको बोलते हैं जिसमें हर एक एलिमेंट का मॉलिक्यूल्स इक्वल होगा, either left hand side और right hand side. Then वैसे रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे balanced chemical equations. So this is the example. Suppose magnesium that with oxygen gives the magnesium oxide. Now we will count the number of atoms of each element and will show in the left hand side and right hand side. So first element is magnesium, and you can look the number of magnesium in left hand side is 1. So there is 1, and number of magnesium in right hand side is 1. Understood? Next element is oxygen. And here we can look the number of oxygen is 2. The atom of the oxygen element is 2 in left hand side, and right hand side in the number of oxygen is 1. So here we can look the number of magnesium is 1 in left hand side, and in right is 1. So magnesium is equal. Now number of oxygen
in left hand side there is 2 and there is 1 oxygen in right hand side, so the number of oxygen is not equal. So next step we have to multiply it by, so next step we have to equal the number of oxygen in the left hand side and the right hand side. So इसको इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में जहां ऑक्सीजन प्रेजेंट है वहां 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हम लोग देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन राइट हैंड साइड 2 है एंड लेफ्ट हैंड साइड आल्सो 2 है, देन दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. नाउ लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक बार चेक कर लेंगे कि नंबर ऑफ atom of magnesium and oxygen in left hand side and in right hand side. First is magnesium and number of magnesium is 1 and in right hand side number of magnesium is 2 and next steps the number of oxygen in right hand side left hand side is 2 and the number of oxygen in right hand side is 2. now हम लोग क्या देख रहे हैं कि while balancing the number of oxygen the number of magnesium is changed. हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे थे देन हमारा मैग्नीशियम का नंबर क्या हो गया है, चेंज हो गया है. तो क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, वी हैव टू बैलेंस द नंबर ऑफ मैग्नीशियम. सो नंबर ऑफ मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा where magnesium is present in the left hand side. So you can say, look, the magnesium is present in the left hand side here, so we will multiply it by 2. now we can look the number of magnesium and the oxygen is same in the left hand side and the right hand side also. This is the simple chemical balance the chemical equation. And next there are the some steps of balancing the equation, balancing the chemical equations. So there are some ways and some rules we have to follow. First is at first हमें क्या करना है, पहले जो भी हमारे पास रिएक्शंस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिए हैं उन्हें बॉक्स से हम लोग को क्या करना, बंद कर देना है. सो फर्स्ट में क्या करेंगे, इसको बॉक्स से हम लोग कवर कर देंगे. जितने भी हमारे पास रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि वी कांट चेंज इन द मॉलिक्यूल्स विच आर रिटेन इन द इनसाइड द बॉक्स. हम कह सकते हैं कि जो हमारे बॉक्स में के अंदर जो लिखा हुआ उसमें किसी तरह का चेंजेस हम लोग नहीं कर सकते. जो भी चेंजेस करना है वह आउटसाइड द बॉक्स है. ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है. फर्स्ट स्टेप टू मेक द बॉक्स ऑफ द compounds which are present in the chemical equation. Second steps we have to make the table. Second step we have to make the table and in which we will show the number of atoms of each element that is present in the chemical reactions. So first is there, you can look, there is a first element is iron. First element is iron. Then हम लोग काउंट करेंगे कि जो नंबर ऑफ आयरन है वह लेफ्ट हैंड साइड में कितने प्रेजेंट है एंड राइट हैंड साइड में कितने प्रेजेंट है. तो फर्स्ट में हमने देखा था कि जो नंबर ऑफ आयरन जो था हमारा लेफ्ट हैंड साइड में 1 था एंड राइट हैंड साइड में 3 था. राइट हैंड साइड में 3 था एंड number of hydrogen in left hand side is 2 and right hand side is also 2 and number of oxygen is 1 in left hand side and 4 is right hand side. So बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, हमारे पास 3 आयरन्स है तो क्या आयरन है तो क्या करेंगे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे वेयर जहां पर हमारे आयरन प्रेजेंट है. सो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं एंड इस जो फॉलोइंग तरीके से क्या है हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं. Next topic will be the
Informative equations. The chemical reactions can be more informative by indicating the states of the compound and states of the substance that are present in the chemical equation. So if any substance present in the solid states, we can represent as S for solid and L for liquid and gas for Z for gas, and sometimes we use the arrow which are indicating the above. It means the evolution of gas. It indicates the evolution of gas. Next, aqueous. Aqueous, it means any substance dissolved in water is called the aqueous. अगर कोई substance हमारा water में dissolve है तो उसके लिए हमें represent करने के लिए एक Q word का use करते हैं, that इसका मतलब क्या है, aqueous है. Next है reaction. नेक्स्ट प्रेसिपिटेट को हम लोग एरो विच इंडिकेटिंग द डाउनवर्ड्स, ऐसे एरो से इंडिकेट करेंगे जो हमारा क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर इंडिकेट करेगा. प्रेसिपिटेट मींस एनी सब्सटेंस व्हिच आर insoluble in water is known as the precipitate. We can say that the substance which is formed during the reactions and that is insoluble in water, that is called the precipitation. And also the chemical reactions can be make them more informative by indicating the some conditions like temperature, pressure, catalyst, heat. So we can say we can use this symbols indicate the presence of heat. And any conditions like temperature, pressure and catalyst we can write under and the above the arrows. For example, हम लोग समझते हैं you can look these the chemical equations which are written here. The some equations. This is the iron and iron is in the solid form. It means ये इंडिकेट करता है कि जो हमारे पास आयरन है वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में है. एंड H2O in liquid form and Fe3O4 ferric oxide is it is in the solid form and H2 हाइड्रोजन गैस. इसमें हम लोग को आयरन एरो दिखाया गया है जो कि एवब डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है. इट मींस इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. सेकेंड इक्वेशन हम लोग देख पा रहे हैं, हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है. व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड्स को हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करते हैं एट द 340 एटीएम प्रेशर, 340 एटीएम प्रेशर पर जब रिएक्ट करते हैं देन हमारा ये मिथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है. इट विल गिव्स द मिथेनॉल्स. ये जो रिएक्शन कंडीशन है ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि इस प्रेशर में बस रिएक्शन क्या हो रहा है, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है. नेक्स्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज. So carbon dioxide react with the water in presence of sunlight and the help of chlorophylls. It will give the glucose and oxygen gas is evolved and some amount of water will be formed. Next, in next steps I will discuss about the types of reactions. Basically in this chapters we have to discuss the combination reaction, decomposition reaction, displacement and double displacement reactions. These are the types of reactions which have to discuss in the chapters. So let us start the first equations, that is the combination reaction. First equation is a combination reactions. Then what is the combination reaction? A reaction in which two or more reactants combine to form a single product is called the chemical combination reactions. ऐसा रिएक्शन जिसमें टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, देन इस तरह के रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन करते हैं. फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ कोल यू कैन लुक कार्बन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स द कार्बन डाइऑक्साइड.
इसमें एक कार्बन एंड ऑक्सीजन, दो कंपाउंड्स, दो रिएक्टेंट्स मिलकर के एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, देन वी कैन से दैट दिस इज द टाइप्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सेकेंड एग्जांपल, द फॉर्मेशन ऑफ वाटर. Formation of water undergoes the reaction with the hydrogen gas and water gas. In these reactions we can look the also two reactants present, hydrogen gas and the oxygen gas. जब लोग कंबाइन करके क्या करते हैं, सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये क्या हमारे पास है, combination reactions. These are the examples of combination reactions. One another examples like the when quick lamps react with the water, it is from the calcium oxide. The common name of the calcium oxide is the slaklan, calcium hydroxide. Next types of reactions is the decomposition reaction. Decomposition reaction is the types of reaction in which a single compound breakdowns or dissociate into the two or more than two products. This types of reaction is known as the decomposition reaction. There are basically three types of decomposition reaction. First is thermal decomposition reaction, second is photolytic decomposition, and third is electrolytic decomposition. So you can look first types of decomposition reaction is the thermal decomposition. Thermal decomposition is the types of decomposition reaction in which the reactants decompose in the presence of heat. ऐसा रिएक्शन ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें एक सिंगल कंपाउंड हीट के प्रेजेंस में वो डिसोसिएट होगा और ब्रेक डाउन होगा, तो उस टाइप्स के रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. These are the some examples of the thermal decompositions. First is the ferrous sulfates, breakdown of the ferrous sulfates. Ferrous sulfate को जब हीट किया जाएगा, then it will convert into the ferric oxide, Fe2O3, and the sulfur dioxide and sulfur trioxide. Second example, the breakdown of the limestone. In presence of heat, it will give the calcium oxide. The common name of calcium oxide is the quicklime, and the carbon dioxide. Next example, the decomposition of the thermal decomposition of the lead nitrate. जब lead nitrate को हम लोग decompose करते हैं, then it will gives the lead oxides, nitrogen dioxide, and the oxygen. These all are the examples of decomposition reaction of the thermal in the presence of heat. Second types of the decomposition reaction is the photolytic decomposition reaction. The photolytic decomposition reaction is the types of decomposition reaction in which any substance decompose or break down in the presence of sunlight. ऐसे reactions, ऐसे decomposition reaction जो sunlight के presence में break down हो करके वह two or more than two product का formation करेंगे, that is called the photolytic decomposition reactions. These some examples of the photolytic decomposition. In the very first examples, the decomposition of the silver chloride in presence of sunlight, it will give the silver metals and the chlorine in the form of gas. Second examples, silver bromide, it will decompose in presence of sunlight in the silver metal and the bromine in the form of gas. Next types of the decomposition reaction is the electrolytic decomposition reaction. Then what is the electrolytic decomposition reactions? The decomposition reaction in which the substance or reactants undergoes the dissociation in the presence of electricity. This types of reaction is known as the electrolytic decomposition. ऐसा reaction जो electricity के presence में वह दो या दो से ज़्यादा product में decompose होते हैं, then उस तरह के reactions को हम लोग electrolytic decomposition reaction कहते हैं. Examples is the electrolysis of water. जब water को electrolysis किया जाता है, it means electricity से pass किया जाता है, then water will convert into the hydrogen gas and the oxygen gas. This is the examples of the electrolytic decomposition. Next types of example reaction will be the displacement reactions.
Next types of reactions will be the displacement reactions. Then any reactions in which atom of or the metals which displace or replace the any group of atoms and the molecules in the reactions is known as the displacement reaction. We can say that कि एक ऐसा रिएक्शन इसमें जिसमें एक हमारा मॉलिक्यूल और एटम जो क्या करेगा दूसरे कंपाउंड के मॉलिक्यूल को और एटम को रिप्लेस कर देगा, वैसे रिएक्शन को बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. सो in this reaction basically the more reactive metals displace the less reactive metals in the reactions. So we can discuss this displacement reaction by the some examples in which when the iron react with the copper sulfate, it will give the iron sulfate plus copper. We can say that we can look here. Iron displaces the copper from the copper sulfates. It means iron is more reactive than copper. वैसे मेटल जो हमारा आयरन जो है यहाँ पर क्या है कॉपर से क्या है मोर रिएक्टिव है. देन ये जो कॉपर को डिस्प्लेस करके ये आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा एंड कॉपर को वो साइड कर देगा. And second example is zinc is react with the copper sulfate. We can look in this reaction zinc is also more reactive than copper. So zinc can replace the copper from the copper sulfate and form the zinc sulfate and copper. Next example is the reaction of lead with copper chloride. We can say that the lead is more reactive than copper. Then lead can replace the copper from the copper chloride and forms the lead chloride and copper. These are the some examples of the displacement reactions. So move to the next examples, double displacement reactions. So the double displacement reaction is a reaction in which the two different ions or group of atoms in the reactants molecule are displaced. It is called the double displacement reaction. Basically एक double displacement reaction ऐसा reaction है जिसमें से टू डिफरेंट एटम्स तो क्या करते हैं रिएक्टेंट्स आपस में अपने मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेस करके टू न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं. इस तरह के रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. वी कैन से इन द अनदर वर्ड्स इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आयंस एक्सचेंज देयर प्लेसेस in the reactions and form the two new product. You can look the some examples here. Sodium sulfate, when sodium sulfate is react with the barium chloride, it will form the barium sulfate and the sodium chloride. You can look the sodium which are present here in the with sodium sulfate and barium chloride. You can look the product side. Barium is attached in the place of sodium and sodium is attached in the place of barium. So इसमें देखा जा रहा है कि दोनों जो आयंस जो है हमारे पास जो एटम्स जो है सोडियम और हमारे पास बेरियम वो क्या कर रहे हैं अपने प्लेस को एक्सचेंज कर रहे हैं. तो ऐसे रिएक्शंस में क्या होते हैं अपने प्लेस को इन लोग एक्सचेंज कर लेते हैं. इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. Next, move to the next types of reaction, that is the oxidation and reduction reactions. So basically oxidation reaction is the reaction in which the addition of oxygen and removal the reaction in which addition of oxygen or removal of hydrogen takes place. This types of reaction is known as the oxidation reaction. ऐसा reaction जिसमें हमारा ऑक्सीजन का एडिशन हो या तो फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. There is